Assalamu alaikum, this is Muhammad Qasim and welcome to my lesson number 1 of my Upwork course. In this particular lesson, we are going to learn कि Upwork की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है ज़ीरो से। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, then we will complete the profile and then we'll move from there. So without any further delay and redo, let's move to the screen. अच्छा जी, जैसे ही आप अपवर्क पे आएंगे तो आपके पास जो सबसे पहली स्क्रीन आपको नज़र आएगी वो ये अपवर्क का होम पेज है। इसमें आप देख सकते हैं अपवर्क ने भी वेरी रिसेंटली इसको रीब्रांड भी किया है। सो दिस इज़ अपवर्क्स होम पेज। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो टू साइन अप एंड सी वेयर इट लीड्स यू। एंड यू क्लिक साइन अप। ये आपसे पूछता है कि आप गूगल के थ्रू साइन अप करना चाहते हैं। आई एम ऑन द मैक, तो मेरे से ये पूछ रहा है कि अगर आप एप्पल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो एप्पल आईडी के थ्रू कर लें, या फिर अगर आपकी कोई वर्क ईमेल है जैसे आई हैव अ कंपनी ईमेल kasim@compass को, या जो आपकी वर्क ईमेल है, राइट, तो आप वर्क ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज माई ट्रेनिंग ईमेल दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स to create this profile. I'll just click okay. He said we noticed that you're using a Gmail address, would you like to use your work email? So I'll just continue with the email. So I'll just very carefully I'll just give my name here, like I'll just choose the name Hassan because this is the profile that I'm going to take further. So this is for your information. So I'll create a secure password and then I will choose a country. Of course, it's Pakistan. Then it is asking me कि यार if I'm here to hire as a client मैं profile बना रहा हूँ या as a freelancer मैं profile बना रहा हूँ. तो I'm making this profile as a freelancer, so I'll just click work as a freelancer. Then I'll choose my username. So I can choose my username, anything for like Hassan UXD. Then I'll just go yes, send me generally used for emails every now and then to help me get most of the work. Yes, कर दो यार. Then yes, understand that again. Yes. Then you hit create my account. When you click create my account, it will take some time and I think ये आपकी email confirmation पे आपको लेके जाएगा. Verify your email to proceed. ठीक है, तो आप अपनी email को verify करें. Alright जी, I'm here and now I'm going to verify my email. So I'll just click verify your email address वाली जो हमारी email आई है Upwork की तरफ से, and then I'll click verify email. When I click on it, it will take me to my profile and it will say your account is already verified and redirecting. And it will redirect me now. So let's wait. So now I am here. तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट नज़र आ रही होगी आपको. इस पूरी लिस्ट को हम लोगों ने fill out करना है in order to complete our profile. Okay जी, now we have verified our email and email verify करने के बाद we have landed on this particular screen. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। हाय मोहम्मद, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क। ठीक है, अभी हमने अपनी प्रोफाइल जो है ना फिल करना शुरू करनी है। ये प्रोफाइल एज एन एप्लीकेशन काउंट होगी क्योंकि अभी अप्रूव्ड अपवर्क प्रोफाइल नहीं है। तो ये सारा को जब हम फिल करके इसको कंटिन्यू करके और एंड पे सबमिट करेंगे ना, तो ये एज अ एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी जो 24 आवर्स अपवर्क की टीम लेती है इसको रिव्यू करने के लिए। एंड देन जैसे इफ़ यू आर राइट मैच तो वो आपको अपवर्क में आने देते हैं, अदरवाइज दे रिजेक्ट योर प्रोफाइल, अप्रूव नहीं करते। हम उसका भी एक ट्रिक देखेंगे कैसे आप अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन वो जस्ट अ ट्रिक है। वैसे इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, द नीड ऑफ योर स्किल एंड हाउ यू परस्यू योरसेल्फ टू गेट इन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड with creating the profile. So I'll just hit the continue and then we'll move to the next step. In this particular step ये आपको clearly बता रहा है कि Upwork is highly competitive, right? And you need to fill out your profile thoroughly and accurately. Then you need to submit your profile and then you will receive an email within 24 hours to let you know if you are accepted or not. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया that Upwork is very choosy about the skill set and the freelancers they choose. तो आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप कौन से स्किल सेट में हैं और किस तरह से आप अपनी स्किल को परस्यू करके अपनी प्रोफाइल फिल इन करते हैं, राइट, सो दैट यू कैन गेट अप्रूव्ड। आई विल आल्सो शेयर अ ट्रिक हाउ टू गेट अप्रूव्ड एंड देन चेंज द स्किल्स लेटर ऑन. Stay tuned for the next lessons. So this is where I'll start building my profile. It's called start my profile. So I click that. It says how do you like to fill in your profile. या तो मैं अपलोड फ्रॉम लिंक्डइन कर लूँ या फिर मैनुअली फिल करूँ. तो मैं यहाँ पे मैनुअली फिल करूँगा क्योंकि अब मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ऑलरेडी मेरे
जो एक्चुअल प्रोफाइल है उसके साथ लिंक्ड है. सो आई जस्ट क्लिक फिल आउट मैनुअली. व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर. सो यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी सर्विस मैं ऑफर करता हूँ. सो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में हूँ मैं, एंड देन आई जस्ट क्लिक सिलेक्ट अ सब कैटेगरी. अगर आप किसी भी फील्ड में या अमेजोन वगैरह में, तो आप अपनी कैटेगरीज यहाँ से फाइंड आउट करके रेलिवेंट कैटेगरीज के अंदर अपने आप को लिस्ट करेंगे. So select a subcategory. Then we have product design. This is where I am in. So design and creative is my main category, and the niche category is product design. So I'll just use product design as my niche category, and then click next. So next step is selecting your skills and expertise. यहाँ पे हम select भी कर सकते हैं या फिर अपनी skills भी डाल सकते हैं. So I'll just start typing my skill set here. So I'm a product designer. Product design. Yeah, again it's selected. Then I'll add UX UI design. नहीं है इनके पास. web design करते हैं. web design, yes it is. Then we have mobile app design. We'll just check mobile app design, yes. Then we have web app design, नहीं है. So SaaS, yeah, because SaaS software as a service हम डिज़ाइन करते हैं. Then we'll choose UI design, UI graphics. So I'll choose the skills that match, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे एज अ सर्च एलिमेंट भी यूज़ होगा और क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को इन कीवर्ड से सर्च करके भी आ सकता है. लेकिन अभी तो आप जस्ट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो पुट एज मेनी skills you can. So I'll just put another one like UX design. You can put 4 more. You can, I think, put 10 skills here, and then you hit next. When you hit next, you are on the expertise level. I'm in the expert level, so I click expert. If you are entry level, तो आप entry level select करें. अगर आप intermediate level हैं तो intermediate level select करें. I'm an expert, so I will hit expert here. Then I'll click next. Here I can add my education if I have any. So I'll add my school here. Let's say I have graduated from Bahria University, so I'll just click Bahria University, Pakistan. You see, it picked it up. Then I'll click BS, area of studies computer sciences. Yeah, so I'll just click computer science, and degree was the bachelor's of applied science. So yeah, dates attended from हम यहाँ से select कर लेते हैं. जो भी मेरी डिग्री की डेट्स हैं, जो आपके डिग्री की डेट, जो आपके एजुकेशन की डेट्स आप डालना चाहते हैं, यहाँ से आप डाल लें. एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, एंड देन यू क्लिक सेव. ये ऑप्शनल है, ये अब ना भी डालें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाल लो तो 4 चांद लग जाएंगे. सो सेव, एंड देन क्लिक नेक्स्ट. अब और भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन और एजुकेशन आप अपनी डाल सकते हैं प्रीवियस स्टेप में, लेकिन आई जस्ट वांट टू ऐड ओनली वन, तो आई जस्ट मूव ऑन. अगर आपका कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डालेंगे. ज़रूरी नहीं है कि वो अपवर्क पे हो या फाइवर पे हो, कहीं भी हो सकता है. वो आपका लोकल भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे डालना. इट एड्स वैल्यू. सो यू कैन ऐड द कंपनी हियर, लाइक लेट्स से कंपस डिज़ाइन को is for example my company. Then I'll add the city, title. My title was lead UX designer there. So then period was, this is actually my agency, so I just choose the period randomly. So May 2015 to June 2020. Let's see, ये मैं यहाँ पे पीरियड था. So I'll just put a description here. I worked here as a UX designer and I learned a lot of things working in a collaborative environment, blah blah blah. So जहाँ पे आप जो मर्जी लिखना चाहिए लिख सकते हैं. It has to be persuasive, by the way. It has to make sense. Copy paste ना करना. You have to do it on yourself. So hit save and then move. So I'll choose the languages. Language बहुत important है, क्योंकि English proficiency आपको पता है कितनी important है in freelancing. So you just need to choose very carefully here. What is your English proficiency? I am fluent, so I'll just choose fluent here. What other languages you speak? I speak Hindi. Proficiency is fluent, and I speak Urdu, and proficiency is fluent. Things like that. अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो फ्रेंच भी यहाँ पर डाल दें. So next,
hourly rate. What is my hourly rate? I will start from my hourly rate of like $25 because I'm an expert. और अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एज लो एज $5 पे भी जा सकते हैं, $2 पे भी जा सकते हैं, बट डोंट डू दैट. जस्ट हैव सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट. सो लाइक $5 एन आवर पे आप अपना स्टार्ट करें. देन वी हैव अपवर्क सर्विस फीस कैन बी एज लो एज 5%. ठीक है, इट डिपेंड्स. अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बता देगा. अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20% ही लेता है आप. और जी आई जस्ट वॉच दिस वीडियो. उस वीडियो में उसने बताया हुआ है कि अगर आप क्लाइंट्स शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, उसके साथ $500 तक काम करते हैं तो आपको 20% चार्ज किया जाएगा. इफ़ यू मूव अ लिटिल अप, ठीक है, देन यू विल बी चार्ज 10%. एंड इफ़ यू मूव टू $10,000, अगर आप किसी क्लाइंट को चार्ज करते हैं तो आपको 5% चार्ज करेगा अपवर्क अपनी फ़ी. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इनकी फ़ी कम होती जाती है. सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट हाउ इट वर्क्स बाय वाचिंग दिस वीडियो. सो और यू कैन जस्ट सिंपली स्किप दिस स्टेप hourly rate. लेकिन हमने अभी इसको प्रॉपर्ली फिल आउट कर दिया तो आई जस्ट हिट नेक्स्ट. यहाँ पे अब मेरे से मांग रहा है कि आपका टाइटल और प्रोफेशनल ओवरव्यू क्या है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपवर्क की प्रोफाइल को बनाने के लिए आपका. सो इसकी बेस पे ही मुझे लगता है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव या डिसअप्रूव होती है. सो आई जस्ट माई टाइटल इज सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर, डिज़ाइन थिंकिंग, and I'll just choose UX UI designer. It all makes sense, right? Because it belongs to the same industry. So यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखूंगा. ये ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी कहीं लिख के रखा हुआ है. I'll just copy and paste it here, right? So आपका ओवरव्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. 3-4 चीज़ें हैं आपके ओवरव्यू में जो आपने ख्याल में रखनी है. नंबर 1 is going to be who are you and what you do, why you are important. Number 3, what's your process and deliverables. ये 3 चीज़ें अगर आप पे क्लियर होंगी ओवरव्यू में तो आई थिंक ये एक बड़ा वेल रिटन ओवरव्यू होगा, क्योंकि इट्स नॉट बीटिंग अराउंड द बुश एंड यू आर जस्ट कमिंग टू द पॉइंट और सीधी सीधी आप बात कर रहे हैं. तो ये क्लाइंट ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते. सो आई जस्ट मूव. तो अपना ओवरव्यू मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है. आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. जी, तो आई जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड माई ऑन लिटिल प्रोफेशनल ओवरव्यू है एंड देन आई हिट नेक्स्ट. सो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू बहुत अच्छे से लेके डाल सकते हैं. अभी मैंने अपना वेरी शॉर्ट बायो कहीं से कॉपी एंड पेस्ट किया है. सो आई जस्ट hit next because this is for the training purpose. So if you want to see that how professional overviews can look, let's have a look at my original profile so that you can have a look. मैं आपको अभी अपनी original profile का overview दिखाता ताकि आपको एक idea हो जाएगा how it is perfectly written. As you can see, I start with who part. I just explained. Then I specialize in designing and developing user interfaces and digital products. I don't restrict myself to design. The blend of design, user experience, marketing and businesses where I feel excel. अच्छा, मैंने बता दिया कि मैं क्या हूँ और मैं किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और कैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, राइट. देन फिर मैंने उसको बताया कि मैं why I am important. Properly executed product design should translate into economic value for your business. Then through research into the target audience your business is serving, it can help to identify the needs of your prospects and clients, then resync that with your value proposition. By developing branded aesthetics and right product strategy, your end user will then enjoy the best possible user experience. अच्छा, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया why I am important and why he should hire me. Then I simply listed my skill set here. My primary skill set include UX, UI design, wireframing, prototyping, visual design, interaction design, brand identity, etc. So this is an example of an overview from my original profile. This is exactly what you can do in order to make your profile better. So यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल जो ओवरव्यू है डालेंगे और उसके बाद यू कैन हिट नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे अब अपनी बहुत अच्छे वाली जो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आपके पिक्चर है ना वो डालें. आई हाईली सजेस्ट दैट कि आप यहाँ पे एक अच्छी पोर्ट्रेट डालें बिकॉज दिस इज़ वेयर यू गेट द क्लिक. अटेंशन मिलती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर को बिकॉज जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, वो बेसिकली आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. आपके साथ तो बाद में जब वो मीटिंग पे है तब इंटरेक्ट करता है. सो यू हैव टू अपलोड योर बेस्ट पॉसिबल एवटार दिस. आई जस्ट सी कि मेरी कोई अच्छी पिक्चर है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ. सो आई जस्ट गो हियर
and then choose the picture. I have, this is a good picture. रेड मैंने बैकग्राउंड यूज किया, इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर यूज किया. इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स द पर्सन कि ये प्रोफेशनल लुकिंग है कि नहीं है. ये देखो, ये गाइडलाइन भी दे रहा है प्रोफेशनल फोटो की. इंक्लूड ओनली योर फेस, हैव अ न्यूट्रल बैकग्राउंड, क्रिस्प रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल लुकिंग, ताकि इट कैन मेक सेंस. जैसे अब आप अपलोड करेंगे, then you can move next. When you hit next, here you need to put all of your address, city and zip code. उसके बाद I'll just put it here. एड्रेस में यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ, like बैरियर टाउन, इस्लामाबाद. ठीक है, 169D and then Islamabad. Yeah, Islamabad. Then I'll put the postal code and then I hit next. Then I put my phone number here, and after putting my phone number, I can just put something like whatever, and then I hit preview profile. ठीक है, जैसे you will complete your profile, this is your preview. ये आपको दिखा रहा है कि ये आपने fill out किया सारा कुछ. But before you submit it, अगली वीडियो में हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल के अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो अगली वीडियो में, अगले लेसन में, वी विल डिस्कस हाउ यू कैन गेट योर प्रोफाइल अप्रूव्ड. दिस इज़ योर प्रीव्यू पेज. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.